We have been drawing about the graph related to the displacement, velocities and accelerations na beta. Displacement or velocities ho chuka hai. Now let us try to go for the next one, that is about your accelerations. Acceleration ka graph. First tell me, what is the equation of an acceleration beta? Standard equation kaise likhte hain as a function of time? A is equals to minus of omega square into a into sine of your omega into t. और हम लोग इसका कैसे लिख सकते हैं? A is equals to minus of omega square into y. ठीक है ना? तो acceleration as a function of time क्या होता है? A is equals to minus of your omega square a into your sine of your omega t. फोर्स लिखना है तो क्या करोगे आप? F is equals to force on a particle minus of m into acceleration. Acceleration का फॉर्मूला minus omega square into y. ठीक है ना? AT ग्राफ देखो. ठीक है, सॉल्व AT ग्राफ बेटा. एक्सेलरेशन नेगेटिव में है ना, तो इट इज नेगेटिव स्लोप ऐसा साइन फंक्शन, isn't it? Starting from origin, this is your O, isn't it? So ये हो गया इसका मैक्सिमम और ये हो गया इसका मैक्सिमम. ठीक है, this will be plus omega square into a, this will be minus of omega square into a. डन बेटा. उसी तरह से एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ए वाई ग्राफ कैसा रहेगा बताइए? एनीवन? Can anyone tell me what will be the AY graph? Acceleration versus displacement का ग्राफ कैसा रहेगा बेटा? A is equals to minus of omega square into y है, isn't it? तो y is equals to mx के फॉर्म में, तो acceleration along your y axis होगा, and this will be a straight line passing from your right hand, making an angle of your theta. ठीक है, tan theta क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? A is equals to minus of omega square into y में, I'm equating with y is equals to m into x. X axis पे displacement ले रहे हैं, y axis पे acceleration ले रहे हैं, and इसका slope कितना बन जाएगा बेटा? Slope will be equal to minus of omega square, यानी omega square. So tan theta will be equal to omega square. So theta will be equal to your tan inverse of your omega square. This will be the slope. Then equating with y is equals to m into x, a is equals to minus omega square into y. Clear है सभी को? Acceleration का फॉर्मूला क्या है? A is equals to minus of omega square into your a sin omega t. So this is the acceleration as a function of your time. Acceleration as the function of your time. This is the acceleration as the function of your displacement. Done बेटा? Force versus y का भी ग्राफ ऐसे ही रहेगा बेटा. It is asking the graph of your force versus y. इसका भी ग्राफ ऐसे ही रहेगा, straight line ऐसा origin से कर लीजिए. Then there will be a straight line passing from the origin lines. This is force versus your y graph, making an angle of your alpha or theta, anything. Done? So, this is something very important. Already last year भी इस पे questions पूछा गया था. Phase difference between
First one. सोच समझ के बोलो बेटा. Phase difference between displacement y bar and v bar of a particle in a section. कितना होगा बताइए. y का फंक्शन क्या है बेटा? देखो डायग्राम में यहाँ पर अगर मैं y का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, y का फॉर्मूला y is equal to a into sin omega t and velocity is equal to a into cos omega t. तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री. एक साइन है, कॉस फंक्शन है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? z equals to pi by 2. Done बेटा. Then velocity and acceleration of a particle in SHL कितना होगा बताइए? वेलोसिटी का फॉर्मूला v is equal to ओमेगा cos ओमेगा t, एक्सेलरेशन का साइन. इन दोनों के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना बनेगा बेटा? पाई बाई 2. थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन y and a of a particle in SHL कितना हो जाएगा? दोनों भी साइन फंक्शन है बेटा, लेकिन when एक प्लस साइन फंक्शन है, अदर वन माइनस साइन फंक्शन है. क्योंकि y is equal to क्या होता है? y is equal to a into sin omega t होता है, और एक्सेलरेशन इज a is equal to माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर into a into sin omega t. दोनों का साइन फंक्शन ही है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई? 180 डिग्री, पाई रेडियंस. भाई और ए का ग्राफ क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर. क्लियर विद एवरीवन? डन बेटा. Then a particle moves with SHM in a straight line. In a straight line in first tau seconds. What is the question? The particle moves with SHM in a straight line in first tau seconds after starting from rest. After starting from rest, comma, it travels a distance. It travels a distance A in next tau seconds. Okay. Starting from rest, it travels a distance A in the next tau seconds. Sorry, after t seconds, after starting from rest, it travels a distance of your A.
Done. And in next tau seconds, it travels a distance 2a in same direction. In the same direction. Then find amplitude. Find amplitude of its motion. Find amplitude of its motion and a time period. And time period of oscillation. Try to see this question first. Try to understand the question better. It is very important model. You can directly remember the method also to do. A particle moves with SHM in a straight line. So the particle is moving in a straight line. यहाँ मैं draw कर रहा हूँ. तो ये हो गया मेरे पास एक straight line. ठीक है? So in the first tau seconds, after starting from rest, it travels a distance of your how much from your A. So particle is moving in a straight line with the first tau seconds after starting from rest. यानी अगर ये mean position है, the particle is starting from rest in a straight line in the first tau seconds after starting from rest, it travels a distance of your A. यानी when it is at rest मतलब it will be at extreme position. It will be at your extreme position. यानी यहाँ पर tau की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. और ये पार्टिकल जो है ना इस तरह से जा रही है from the extreme position. Isn't it? और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बेटा यहाँ से यहाँ तक? It has been traveled a distance of your A. Isn't it? इन कितने टाइम में? tau seconds. Next tau seconds में it is traveling a distance of यहाँ तक आ रही है. It is traveling a distance of your 2a. ठीक है? Next tau seconds. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बताओ? यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लूँ a plus 2a plus a, so this will be equal to 3a. और इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है बेटा? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का टोटल डिस्टेंस जो होता है ना उसको हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है ना? दिस इज द सिचुएशन. नाउ टेल मी एनीवन व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, व्हाई नॉट फ्रॉम द मीन पोजीशन? मीन पोजीशन के पास वेलोसिटी मैक्सिमम रहती, लेकिन पार्टिकल बोल रहा है कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. Its initial velocity is rest. That means the particle will be at extreme position. वो गलती मत करना. Don't try to take it from mean position. Mean position के पास velocity is 0. Acceleration maximum. Extreme position के पास velocity maximum. Acceleration 0. इसीलिए we are starting from the extreme position. Amplitude कितना है इसका? ये. So let amplitude of oscillation is equals to capital A. I hope everyone got it. Why I'm starting from extreme position बेटा? क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर 0. वेलोसिटी 0 कहां पर होती है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पे ही होती है. मीन पोजीशन के पास वेलोसिटी मिनिमम मैक्सिमम होती है. क्लियर है? तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? y is equals to your a into sin of your omega into t. सॉरी एक्सट्रीम पे है ना, एक्सट्रीम पे रहे तो cos लेना चाहिए, मीन पे रहे तो साइन लेना चाहिए. तो y is equals to a into cos omega into t. ठीक है? So what will be the distance from here to here बेटा? मीन पोजीशन से लेके ये पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए. फर्स्ट वन के लिए. isn't it? So I can write here the equation right now for you. अगर मैं इसका फर्स्ट इक्वेशन लिख लूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए will be equal to your amplitude उसका हो जाएगा ये into your cos omega into t. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट t seconds, in next tau seconds, next tau seconds मतलब distance will be equal to how much बेटा? बताओ जल्दी से, कोई बताएगा? What will be the distance?
यहां से यहां तक होगा ना बेटा नेक्स्ट डिस्टेंस, यानी कैपिटल ए माइनस 3 ए होगा ये, कैपिटल ए माइनस 3 ए, दैट मींस कैपिटल ए माइनस 3 ए is equals to your a into your cos omega into t. This is equation number 2. Done बेटा. टाइम कितना हो जाएगा, ये टी डैश हो जाएगा ना बेटा. नेक्स्ट टॉ सेकंड्स के लिए बोल रहा है, तो यहां से यहां तक आने के लिए इसके लिए टाइम कितना लगा, टी डैश विल बी इक्वल टू 2t, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी मुझे यहाँ पर कैपिटल ए माइनस 3a will be equal to your a into your cos of your 2 omega into t. So this is my equation number 2. ठीक है ना, यानी cos 2 omega t कितना बन जाएगा बेटा, cos 2 omega t will be equal to a minus 3a divided by a, and this will be equal to 1 minus 3a divided by capital A. ठीक है, cos 2 थीटा कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, 2 cos square omega into t will be equal to minus 1 will be equal to 1 minus 3 into a divided by capital A. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा रहा हूँ, इसमें से मैं यहाँ पर 2, ये कितना बन जाएगा, दिस इज 2 into cos square omega t. cos omega t कितना होता है बेटा, cos omega t कितना बनेगा बताइए कोई, we know the formula capital A minus small a is equals to a into cos omega t. तो cos omega t कितना बन गया, cos omega t is equals to capital A minus small a divided by capital A, यानी 1 minus small a divided by capital A. So I can write here 1 minus small a divided by capital A का whole square minus 1 is equals to 1 minus 3a divided by capital A. बस अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा देख लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू योर 2 plus this will be equal to 2 into your a square divided by your a square. This is minus of 1. A minus b whole square है ना बेटा, this will be equal to 4 into a divided by capital A minus of your 1. That will be equal to 1 minus 3a divided by capital A. ठीक है, कितना आ रहा देखिए, एनीवन कुछ कैंसिल होते दिखाई दे रहा है, ये माइनस 1 ये प्लस 1 चले जाएगा और ये 2 भी चले जाएगा, इसलिए तो बचा कितना अभी मेरे यहाँ पर 2 into a square divided by a square minus 4 into small a divided by capital A is equals to, this will become for me 3 into a divided by capital A. Done. आ गया,
ये माइनस किधर लेके चले जाइए. So this will become for me 2 into your a square divided by capital A square will be equal to small a divided by capital A. A square चले गया, a और a square चलेगा, 2a divided by capital A is equals to 1 and in 2a is equals to 1. So a will be equal to how much for बेटा, ये capital A है ना यहाँ पर, 2a divided by your a, तो ये हो गया capital A. So amplitude will be equal to how much for 2 times of it. So calculation का ही करना है बस अपने. उसके बाद इसमें टाइम पूछा हुआ, that what time it will become for me, यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए will be equal to your a into cos of omega into t था. कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कितना आ जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड कितना है अपने पास 2a माइनस ए will be equal to, ये बनेगा 2a into your cos omega into t. So this is your a is equals to 2a into your cos omega into t. तो ये और ये gets cancelled, तो cos omega t will be equal to 1 by 2, यानी omega t will be equal to pi by 3. ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 pi divided by capital T into time is represented by letter tau, that is equals to pi by 3. Pi और pi gets cancelled, so time period will be equal to how much बेटा, capital T will be equal to your 3 to the 6 times of your tau. आ गया, फिर से एक बार देख लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है. A particle is moving with an SHM in a straight line in the first tau seconds after starting from the rest. When it is using a word after starting from the rest, मतलब ये अपने को समझ में आना कि the particle is not at the mean position but in an extreme position. That is the reason I'm using the equation y is equal to a into cos of your omega into t. And it travels a distance of a in the and it travels a distance a. So extreme position से start करके it is traveling a distance of your a in tau seconds, the first tau seconds. उसके बाद next tau seconds में travels a distance of 2a and a total time taken will be equal to how much, 2t seconds, 2 tau, isn't it? तो अगर ये के पास है मतलब distance from the mean position कितना हो गया, capital A minus small a, because y we always take from the mean position ना, तो capital A minus small a, y की वैल्यू always we measure from the mean position. अगर distance a travel करा तो mean position से remaining distance कितना है, capital A minus small a. So मैंने क्या किया यहाँ पर, capital A minus small a is equals to your a into cos of omega t लिख दिया. Next tau seconds मतलब next tau seconds में it is traveling a distance of how much बेटा, from extreme position a plus 2a 3a. Mean position से distance कितना हो गया, capital A minus 3a is equals to a into cos omega into tau dash. Time कितना हो जाएगा बेटा, 2t. So capital A minus 3a is equals to a into cos 2 omega into t. तो इसमें से cos 2 omega t निकाला, capital A minus 3a divided by a, that is equals to 1 minus 3a by your e. तो इसको देखो क्या कर लिया मैंने, 2 into cos square omega t minus 1 is equals to 1 minus 3a divided by a. So it is 2 into 1 minus cos omega t की वैल्यू कितनी होती है, 1 minus small a divided by capital A whole square minus 1 is equals to 1 minus 3a by capital A. इसको simplify कर लिया and we are getting the value of amplitude is equals to how much for me, 2a. Once we get that one, I'm substituting that value in the equation, y is equals to your a into cos of omega t. Y की वैल्यू कितनी है, capital A minus small a. Done. ये ऑलरेडी माइनस है ना बेटा, ये चले गया ना, दिस इज ऑलरेडी माइनस हियर राइट. ठीक है, चलो कैपिटल की वैल्यू कितना आ गया, 2a माइनस a इज इक्वल टू 2a into cos omega t. तो 2a minus a is a, that is 2a into cos omega t. Cos omega t कितना आ गया, half, यानी omega t is equals to pi by 3. For what value of the cos it is 1 by 2 बेटा, cos pi by 3. So omega की वैल्यू 2 pi by capital T into tau लिखते हो, that is pi by 3. So pi gets cancelled, so capital T will be equal to tau seconds. आ गया, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The velocity of a particle in SHM at a displacement
y1 and y2. Displacement y1 and y2. Are v1 and v2 respectively. Now question is find number 1 amplitude of SHM, number 2 of time period. The velocity of a particle in SHM at a displacement y1 and y2 are how much Varni? v1 and v2 respectively. Velocity का formula याद है आप लोगों को? V is equals to omega under root of your a square minus y square. अब ये मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ, v1 के लिए लिख रहा हूँ, तो v1 is equals to omega under root of your a square minus y1 square. इसी तरह से v2 लिख दो, v2 is equals to omega under root of your a square minus y2 square. So this is my equation number 1 and this is my equation number 2. Now divide both of them better. Solving 1 and 2. यानी v1 divided by v2 कर दो. Omega omega तो cancel हो जाएगा. That is under root of ये बना a square minus y1 square divided by under root of your a square minus y2 square. ठीक है ना? Now what you do is square on both the sides. Square on both the sides. तो कितना बन जाएगा? v1 square divided by v2 square is equals to a square minus y1 square divided by a square minus y2 square. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. So it is v1 square into a square minus y2 square is equals to v2 square into a square minus y1 square. ठीक है ना? So now if I multiply this one, v1 square into a square minus this will be equal to your v1 square into your y2 square. That is equals to v2 square a square minus v2 square into y1 square. ठीक है ना? So now all the v1 terms you take on one side better. All the v1 terms you take on one side. And all the v2 terms with your displacement you take on other side. तो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, तो इस एम्पलीट्यूड को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इस वाले को इधर लेके जा रहा हूँ. तो ये बन जाएगा मेरे पास v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू ये हो गया एम्पलीट्यूड कितना a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा बेटा यहाँ पर v1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर. v1 square into y2 square. So this is v1 square y2 square minus this is v2 square y1 square. ठीक है ना? तो इसमें से एम्पलीट्यूड निकाल दीजिए. a square will be equal to your v1 square y2 square minus v2 square y1 square divided by v1 square minus v2 square. So amplitude will be equal to how much? A is equals to under root of your ये बन गया मेरे पास v1 square y2 square minus v2 square y1 square divided by v1 square minus v2 square. This is the amplitude. आ गया सभी को? सिर्फ कैलकुलेशन करना है बेटा. डन. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मैंने डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग देन एम्पलीट्यूड देयर. दैट्स इट. आ गया तो बा कैलकुलेशन बोलना है फिर से एक बार. वेरी गुड. चलो अब नेक्स्ट वन क्या निकालना है? देखो अपने को टाइम पीरियड निकालना है. सो टाइम पीरियड के लिए क्या करो पहले आप इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट करो. ठीक है ना? फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करो, सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं, दिस इज योर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई टू स्क्वायर। तो ये वाला तो कट गया, प्लस वाला माइनस वाला, तो बन गया मेरे पास वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा टू इंटू वाई टू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर। तो इसमें से ओमेगा कॉमन बन गया, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर ये बन गया वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। Once I know the omega, I can calculate the time period beta. T is equals to 2 pi by omega. Time period निकालने का फॉर्मूला T is equals to 2 pi divided by omega. यानी ये बन गया मेरे पास 2 pi under root of your ये उल्टा हो जाएगा ना बेटा, so it will be your y2 square minus y1 square divided by this one is v1 square minus v2 square. So this will be the time period. T is equals to 2 pi by omega under root of y2 square minus y1 square divided by v1 square minus of v2 square. Clear है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल velocity of a particle in SHM. SHM is V is equals to under root of 144 minus 16 into x square in SI units. Is it? What we need to do is find number A, इसका amplitude, number B, इसका time period, number C, maximum velocity, number D, maximum acceleration. When velocity is zero, acceleration is maximum, but when acceleration is zero, velocity is maximum. ठीक है ना? चलो ट्राई करो, पहले एम्पलीट्यूड निकालो। कोई बताएगा व्हाट इज विल बी द एम्पलीट्यूड बेटा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो पहले, v is equals to अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 16 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ तो क्या बन जाएगा देखो बेटा, v is equals to this value will become how much for me, 4 square into 3 square, उसके बाद ये 4 square, तो 4 मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 4 into under root of your this value will become for me how much बेटा, 3 square minus of your x square। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो फिर वही आ जाएगा, 4 square is nothing but 16 is nothing but 4 square, यहाँ पर भी 4 square into 3 square, तो 4 मैंने बाहर ले लिया, isn't it? Compare it with standard formula, v is equals to omega under root of your a square minus y square और x square। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ओमेगा की वैल्यू 4। ठीक है ना? अगर ओमेगा की वैल्यू 4 हो गई तो सेकंड वन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है अपने पास, t is equals to 2 pi by omega, so it is your 2 pi divided by 4, so 2 ones are 2 twos are, so that will be equal to pi by 2 seconds टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया, डन बेटा, एम्पलीट्यूड भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला v max is equals to a omega, so that will be equal to a is 3, this is 4, so this will be equal to 12 meter per second। मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a max कितना होता है, a max will be equal to omega square into area, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, that is equals to ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 square into amplitude is 3, so that will be equal to 48 meter per second square। आ गया सभी को, एक बार देख लीजिए बेटा। डन, so this question, for a particle in a section
SHM. Equation is given by 4 into d square y by dx square plus 9y is equals to 0. टाइम पीरियड कितना होगा इसका? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हाउ मच? चलो बताओ जल्दी से. कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा. कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है आप लोगों को? a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू y होता है. ये कैसे कर सकता हूं मैं? d स्क्वायर इनटू x और d स्क्वायर इनटू योर y, व्हाट इट मे बी. सो d स्क्वायर इनटू योर y डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर. क्योंकि मैंने यहां पर y से रिप्रेजेंट करा ना, y से ले लेता हूं. d स्क्वायर इनटू y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर और dt स्क्वायर is equals to minus of omega square into y. तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा. वेलोसिटी ले रहा हूं तो टाइम आ जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं ना, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? एक्स स्क्वायर. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन. यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो दिस विल बी डी स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर. ये अंदर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई. तो कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा. कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, d square into y divided by dx square plus this is 9/4 into y is equals to 0. ठीक है ना? तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या है मेरे पास? 9/4. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9/4. यानी दिस वैल्यू विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा? 3/2. ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई बाय कैपिटल T इज इक्वल्स टू 3/2. इन टाइम पीरियड कितना बन गया बेटा? टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू योर 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स. तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड. आ गया? इज इट क्लियर? तो ये क्लास में थोड़ा SHM का इंट्रोडक्शन पढ़ के आइए बेटा. विल ट्राई टू डू द प्रॉब्लम्स बिफोर यू स्टार्ट विद द एनर्जी कॉन्सेप्ट. ठीक है? एक जरा एक बार रिवीजन कर लेना, तो उसके बाद हम लोग इस पे और थोड़े न्यूमेरिकल्स करके देन विल ट्राई टू गो फॉर द एनर्जी कॉन्सेप्ट. ठीक है? टेक केयर बेटा. बाय.